Good morning, everyone. Hope you all are fitting fine. Dear students, today we will discuss chapter number 11, the case of copied question papers, taken from our English literature book. Students, before we start this chapter, let's discuss pre-reading task. Students, if you find a rough copy of the question paper that you are going to take the next day, विल यू इन्फॉर्म द टीचर? आप टीचर को इन्फॉर्म करेंगे बेटा. इन्फॉर्म अदर स्टूडेंट्स अबाउट द क्वेश्चंस. बाकी सभी स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर देंगे कि ये क्वेश्चंस आपके जो है पेपर में आने हैं. एंड नॉट डिस्क्लोज इट टू एनीवन. किसी को भी नहीं बताएंगे, बट लर्न ऑल द आंसर्स योर सेल्फ. सभी आंसर खुद ही अकेले लर्न कर लेंगे. तो स्टूडेंट्स, व्हाट शुड वी डू? हमें क्या करना चाहिए बेटा? स्टूडेंट्स, वी शुड इन्फॉर्म द teacher. Okay, now students, if you see that your partner is copying the answers from his notebook while taking an examination, will you ask for his help in doing your paper also, or urge him not to do so, or not bother yourself, or inform the invigilator? We should inform the invigilator. Now beta, if you have committed a very serious mistake, बेटा अगर आपसे बहुत सीरियस मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है बेटा, देन स्टूडेंट्स विल यू ट्राई टू हाइड योर मिस्टेक? बेटा आप अपनी मिस्टेक सभी से छुपाएंगे? कन्फेस इट बोल्डली, या इसको बोल्डली कन्फेस कर लेंगे. कन्फेस मीन स्टूडेंट्स एक्सेप्ट कर लेना अपने मिस्टेक्स को. ओके, कन्फेस इट बोल्डली और नॉट बी कंसर्न्ड अबाउट इट. स्टूडेंट्स, वी शुड कन्फेस इट boldly. Okay students, now students, let's read the play. It was in the year 1895. We were residing close to our library to make some researches in early English charters. One evening we received a visit from a person whom we knew Hilton Sops. He was a tall man of nervous and excitable temperament. Temperament students, nature. Okay, like excited temperament students we can say. It was clear that he was extremely agitated or something. बेटा ये बहुत क्लियर था कि वो बहुत जल्दी एक्सट्रीमली एजिटेटेड, बहुत जल्दी अपसेट हो जाते थे, या वी कैन से एंक्शियस हो जाते थे ओवर समथिंग. नाउ स्टूडेंट्स, इट्स कन्वर्सेशन बिटवीन मिस्टर सोम्स एंड मिस्टर होम्स. स्टूडेंट्स, लेट्स रीड इट. मिस्टर होम्स, कैन यू स्पेयर मी अ फ्यू आवर्स ऑफ योर वैल्यूएबल टाइम? कि क्या आप मेरे लिए कुछ वक्त निकाल सकते हैं अपने प्रेशियस टाइम में से, इम्पॉर्टेंट टाइम में से, वैल्यूएबल टाइम में से? वी हैव हैड अ वेरी पेनफुल इंसिडेंट एट द कॉलेज. ओह रियली? आई मस्ट एक्सप्लेन टू यू मिस्टर होम्स. टुमारो इज द फर्स्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर स्कॉलरशिप. स्कॉलरशिप के लिए कल जो है फर्स्ट डे है. Today, about 3 o'clock, the proofs of this paper arrived from the printers. और आज मैंने कितने बजे इसके प्रिंट्स निकाले? 3 o'clock. Today, about 3 o'clock, the proofs of this paper arrived from the printers, and I had to read them carefully as the text must be absolutely correct. और मुझे उनको अच्छे से रीड करना था ताकि टेक्स्ट जो है, जो भी इसमें हमने राइट करा है, वो सब ठीक हो. But at 4:30, however, I left to take tea इन अ फ्रेंड्स रूम. बट मैं 4:30 अराउंड जो है अपने फ्रेंड के रूम पर चला गया. वाई? टू टेक टी. माई टास्क वॉज नॉट येट कम्प्लीट. मेरा वर्क जो है, टास्क में स्टूडेंट्स काम, मेरा वर्क जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था. सो आई लेफ्ट द प्रूफ्स अपॉन माई डेस्क. इसलिए मैंने जितने भी प्रूफ्स थे उन पेपर्स के, उन सभी को डेस्क पर रख दिया. आई वॉज एब्सेंट फॉर मोर देन एन आवर. 1 घंटे से भी ज़्यादा टाइम के लिए वो वहाँ से एब्सेंट रहा. एंड व्हेन आई रिटर्न, और जब मैं वापस आया, आई वॉज अमेज्ड टू सी अ की हैंगिंग इन द डोर. मैं बहुत सरप्राइज हुआ जब मैंने ये देखा कि डोर पर एक की हैंगिंग है. दिस डुप्लीकेट की बिलोंग्स टू माई सर्वेंट बनिस्टर. और ये की किससे बिलोंग करती थी? माई सर्वेंट बनिस्टर. ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन. आई थॉट he might have entered my room to ask for tea. वो बहुत ऑनेस्ट पर्सन है, मुझे लगा कि शायद वो मेरे से चाय के लिए पूछने आया होगा. Then he might have carelessly left the key in the door. और हो सकता है वो ही इस चाबी को यहाँ पर जो भूल कर चला गया हो. Then
Holmes, please continue. Then Soames replied, The moment I looked at my table, जैसे ही मैंने अपनी टेबल पर देखा, चेक करा, I was aware that someone had reached my papers. कि कोई जो है मेरे पेपर्स तक पहुंचा है, मीन्स किसी ने उनके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करी है. द प्रूफ्स वर इन 3 लॉन्ग स्लिप्स, क्योंकि जो प्रूफ्स है वो 3 लॉन्ग स्लिप्स में थे, 3 पेपर्स थे वहाँ पर. आई हैड केप्ट दैम टुगेदर. सॉम्स क्या बता रहे कि मैंने उनको सभी को इकट्ठे रखा था. आई हैड केप्ट दैम टुगेदर, बट नाउ आई फाउंड दैट वन ऑफ देम वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर. बट जब मैं वापस आया तो उन्हें क्या लगा बेटा कि एक पेपर कहाँ पर पड़ा हुआ है, प्रूफ फ्लोर पर, फर्श पर पड़ा हुआ है. वन वॉज ऑन द साइड टेबल नियर द विंडो. एक कहाँ पर है बेटा, नियर द विंडो, साइड टेबल के ऊपर पड़ा है, जो विंडो की तरफ है, विंडो के पास है. एंड थर्ड वॉज वेयर आई हैड लेफ्ट इट, और थर्ड पेपर जहाँ उन्होंने रखा था वहीं. ओके, वन पेपर वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर, द सेकेंड वॉज ऑन द साइड टेबल नियर द विंडो, एंड थर्ड वॉज वेयर ही हैड kept it, or we can say where he had left it. And Holmes said, very interesting. Soames, a large sum of scholarship money is at stake. A wrong man might gain advantage over other fellows. When I talked to Bannister about this, जब मैंने Bannister से इसके बारे में बात की, he nearly fainted. मीन्स वो एक अनकॉन्शियस हो गया. अनकॉन्शियस स्टूडेंट्स वी कैन से फेंटेड, एक जैसे हम बोलते हैं बेटा बेहोश हो जाना. ओके, अनकॉन्शियसनेस, लूज कॉन्शियसनेस, एंड कोलैप्स्ड इन अ चेयर, और मूर्छित होकर जो है, बेहोश होकर वो जस्ट चेयर पर बैठ गया. डू हेल्प मी मिस्टर हॉम्स, आइदर आई मस्ट फाइंड द कल्प्रिट, या तो मुझे कल्प्रिट को फाइंड आउट करना है, और द एग्जामिनेशन मस्ट बी पोस्टपोन, या हमें जो ये एग्जामिनेशन है इसको पोस्टपोन करना पड़ेगा. आई शेल बी हैप्पी टू हेल्प यू, मुझे बहुत खुशी हुई अगर मैं आपकी हेल्प करूँगा. हॉम्स रिप्लाइड, डिड एनीवन विजिट यू इन योर रूम व्हेन यू वर रीडिंग द पेपर्स, कि क्या आपके रूम में कोई आया था जब आप पेपर्स को रीड कर रहे थे, उन प्रूफ्स को रीड कर रहे थे. देन सॉम्स रिप्लाइड, यस, स्टीव, a student who lives on the same floor. yes yes Steve, जो एक स्टूडेंट है जो इसी सेम फ्लोर पर रहता है, वो मेरे पास आया था. he came to ask me something about the examination, वो मुझसे एग्जामिनेशन के बारे में कुछ पूछने आया था. none else in your room, और तो कोई आपके रूम में नहीं आया. वाटसन, no. then it appears that Steve alone could know about the paper, so it seems to me. let's go to your house and examine it. The tutor's room was on the ground floor. Tutor का रूम कहाँ पर था बेटा? On the ground floor. Above that lived 3 students. 3 students और वहाँ रहते थे बेटा. First Steve, then Gilchrist and Ralph. One of each story. Story means here students level पर, floor पर. Okay. All above that lived 3 students. Steve, Gilchrist and Ralph. One on each story. Holmes examined the room. Holmes ने सभी रूम को जो है, पूरे रूम को एग्जामिन किया, चेक किया. And looked at the open window near the table, और उसने विंडो को देखा जो ओपन थी near the table. He thought for a while, कुछ देर के लिए उसे सोचा. And then looked at paper, उसके बाद वो पेपर्स को देखने लग गया. Then Holmes, let me see the 3 papers, मुझे इन 3 पेपर्स को चेक करने दीजिए. There are no fingerprints, यहाँ पर तो फिंगरप्रिंट्स भी नहीं है. देयर आर सम पेंसिल शेड्स, यहाँ पर बट कुछ पेंसिल शेड्स पड़े हैं. पेंसिल शेड्स मीन्स जैसे बेटा आप पेंसिल को जब शार्प करते हो, उसको जो जो उसका मटेरियल बचता है, दैट इज कॉल्ड पेंसिल शेड्स, पेंसिल के छिलके. ओके, नाउ लेट्स सी द टेबल. देयर आर सम ग्रेन्स ऑफ sawdust ऑन इट. मिस्टर सॉम्स, नाउ विल यू कॉल बेनिस्टर इन, कि क्या आप बेनिस्टर जो आपका सर्वेंट है उसको अंदर बुलाएंगे. बेनिस्टर, द ओल्ड सर्वेंट, कम्स इन. देन Holmes, I understand that you left your key in the door. Bannister, yes sir, I have done this mistake other times too. Yes sir, मुझसे ये mistake पहले भी हो जाती है. Then Holmes, now it's the conversation between Holmes and Bannister. Okay, when did you enter the room? आपने रूम में कब एंटर किया था?
Then Bannister replied, it was about 4:30. Near about 4:30 मैंने एंटर किया था and that is Mr. Soames' tea time. और क्योंकि इसलिए because ये जो है Mr. Soames का tea time है. Understand that you left your key in the door? Then Bannister replied, yes, sir. I have done this mistake other times also. Then Holmes again inquired, when did you enter the room? आपने रूम में कब एंटर किया था? Bannister replied, it was about 4:30. That is Mr. Soames' tea time. Holmes again asked, did you look at the papers on the table? Then Bannister replied, no, sir, certainly not. I had the tea tray in my hands. मेरे hands में तो tea की tray थी. So I thought I will take the key later on. इससे मैंने सोचा कि मैं की बाद में ले जाऊंगा. Then I forgot, but बाद में मैं भूल गया. Then Holmes, that means anyone could go inside the room or could get out of it. It means कि रूम में ड्यूरिंग दैट टाइम कोई भी अंदर आ सकता है इजीली और रूम से बाहर जा सकते हैं. देन Bannister replied, yes, sir. When Mr. Soames told you about the papers, were you very much disturbed? Then Bannister replied, yes, sir. I nearly fainted. मैं तो बेहोश ही हो गया था. Where were you standing when you began to feel bad? Bannister replied, here near the door. यही door के पास ही. But you sat down in that chair near the window. Why didn't you sit in the chair near the door? And Bannister replied, it's just a chance. Then Holmes again inquired, were you here when your master left to meet me? क्या आप यहीं पर थे जब आपके मास्टर में से मिलने आए थे? Then Bannister, only for a minute. मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए यहाँ आया था. Thank you. That will do. You may go. Mr. Soames, have you mentioned about this to 3 students living above? कि क्या आपने जो 3 students हैं उनको भी ये बात बताई है? Have you mentioned about this to 3 students living above? Then Soames replied to Mr. Holmes, no, sir, not a word. Students, as we all know that Mr. Soames was upset because a very painful and serious incident had taken place at the college and Mr. Soames was not able to solve it on his own. So students, he went to his friend's room, means Mr. Holmes' room, to relax and have a cup of tea. Now students, read next half of the chapter and try to understand it. That's all for today, beta. Thanks and have a nice day.